Yep. What's up, ladies and gentlemen? Welcome back to ROG Showdown series. I'm your host, Azura Aiden, and alongside me is my wingman, my duo, Hana Aiden. How have you been doing? I've been doing well, and I'm finally happy to, cast with you again on ROG Showdown series because we got to do this the last time, and then I got a change, thankfully. Now my luck has again started drowning, I think. Yeah, definitely has to drown. I mean, the amount of efforts we all put to get this entire thing running, right? I mean, yes, ROG, thank you very much for giving such a good sponsor, and alongside Intel as well, and TEC, a big thanks to them to make this thing happen. I mean, just imagine all of these gamers being enlightened about CS2v2. Absolutely. It's also a platform for people who don't already have an investment into the video gaming industry to just go ahead and try their hand on it. And it's pretty interesting how that's also coming with such a huge stake, not only of being able to brag to the whole store that you were there and you won, but also a lot of prize money out there. Definitely, definitely. Yes, talking about the prize money, the prize pool is of 50,000, a whopping amount. And today's city we are in is Kochi, the God's own country. So, yes, we're going to have a ball over here. It's going to be amazing. And the first prize winners are going to get 35,000. It's like a huge split from that prize pool, and in a one day event which you always talk about, getting 35,000 is such a big achievement alongside bragging rights as well. Absolutely. It's one single day and the prize money is getting distributed into two people alone. That's good enough because you don't have too many players to share it with. It does not shrink down that much. The division is lower and just a lot of fun in one single day because considering it's a store event which is happening one day at a time, you do get to play multiple games on the same day with enough gap between each game, and also it is a 2v2, so it neither exhausts you nor drains you but still provides you with so much fun and entertainment. I mean, what's a better way to spend your weekend than play there? Yeah, it's definitely a blockbuster weekend because, like you mentioned, short span of time, getting that much amount of money is going to be amazing. It's going to be very energetic as well. But here's another point. Like you mentioned, it's only 9 rounds which people have to play in CS2v2. And once you reach to that point, and all you have to do is take the W, keep moving further. For now, it's going to be a BO1, and later on in the grand finale, it's going to be a best of three. Exactly, and the grand finals are going to be super interesting. I do wish that we could, start having some banter soon enough about who's going to be in the grand finals. That's something we did the whole Definitely. time during the last season of ROG Showdown series, and it was pretty interesting. I mean, I am the wing woman here, but I still keep winning. So maybe I'm the ओके carry, maybe you're the wingman. ओके ऐसी कोई बात नहीं है मेरा हमेशा स्कोर आपसे ऊपर ही रहा है सो आई गेस आई एम We गोना can go ahead and check keep the pride last on that. scores. I'm gonna be very happy about that. I am completely gonna ignore whatever you're saying. Okay, cool. Well, if you ignore whatever I'm saying, you're losing again. But okay. Well, Anyways, well, so there's no yes, winning coming here. back to exactly, exactly. Why do you even try?
Oh my goodness. When will you learn? Anyways, going back to talking about ROG Showdown series itself, it's pretty interesting how the story events are going on. I do, know that the last time when I wasn't here, we did end up going to Ahmedabad, and there were quite some funny names of teams out there. They were using, the cultural food of Gujarat to represent their names and stuff. I'm Right. waiting to see what Kochi brings in, because again, this is not one of those tournaments where you have pre-made specific teams who have some specific names to carry. This is True. very you know low key on that matter, and you can go ahead and choose whatever name you want, and it's pretty interesting what people come up with. However, Indeed, here's the indeed. question. I mean, huh? I want to know, what Carry name would on. you use if you were gonna participate in a tournament like this, in a 2v2? I would go by the name called Sweet Mariachi. Huh. I mean, yeah, mariachi is one of the bands I in, I believe, Mexico, and like they used to have like multi. It's just one band's name, but I kind of brought some essence into it, brought some flavor into that, and it went like sweet mariachi, spicy mariachi, salty mariachi, and whatnot. So I would go for sweet mariachi because it okay. was one at one point of time that was my in-game name, and I would go with that. For some reason, when you said mariachi, मुझे मिर्ची सुनाई दिया, and I'm just thinking Oh, sweet sweet mirchi. What's mirchi! wrong with you? Wow. What's wrong with you? But okay, cool. It's Well, you were it's sur- talking it's on the surprising. topic of Gujarati food itself. I just brought that. So, It's surprising how you saying something that does not make any sense still shocks me. yeah, because it's all a moo point, right? At one point, like the amount of times you're going to listen to this, like you're going to keep listening to the same thing, you'll understand, okay, I all of a sudden make sense. And yeah, so that's how it is. I mean, that's how it Not goes, right? really. Not really, but I'll still try to pretend that, because I'm a nice wingman, and a nice wingman is all you need to be able to successful in ROG Showdown series, because it Definitely. does not matter how well you're doing if your wingman is left alone in a True. 1v2 clutch situation, and this is just 9 rounds that you have to win in a row to be able to claim that victory. It's a 16 rounds in total for an ordinary match, and then the overtime added on to it. So what I'm trying to say is, it's a short period game. The stakes are high, True. and they can literally shift places at any moment through this whole scenario. So I guess it's pretty important that people realize how much is at stake, and they pick the best wingman. I didn't get the option, so I'm making do with you, but hopefully Darshita will be back soon. All right. I'll leave that bromance being within you both. But yes, like you mentioned, short span of time and a lot on stake, a lot to do. I would definitely agree with it. The situations which you said of 1v2s are always very dire. And in that, if your wingman is not able to perform, and just imagine that he's stuck in that 1v2, then you definitely know that that round is gone for until there's a miracle literally pulled out from the hat, and it's one of those 1v2s which are being clutched in a very good fashion manner. But yes, utilities are very, very important in CS 2v2, not only 2v2, even in 5v5. But when it comes down to this 1v2 situations, which has just always been there, you can outsmart, outwit your opponent with just utilities. So those are the things which I'm going to be keeping a huge track upon, Ahana, because I want to see how Kochi plays. Last time they did mesmerize us, but is it going to be the same case? I'm hoping for it. I'm definitely rooting for very very mesmerizing game overall from the side of Kochi. But yes, overall जब when you talk about wingman, तो काफी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है in G. the whole utility section. Just as you said, दो ही लोग होते हैं. Being able to afford those utilities itself becomes slightly tougher. But then again, they become very crucial to winning. क्योंकि अगर आपके पास सही True. utilities नहीं होंगी, then you can do no mind tricks, and you'll have to depend completely on your gun game. That too, exposing yourself, which is going to be very difficult for a team which only has two players. So like, जो pressure है वो बहुत high है, and dealing with that is going to be the first thing that our players need to know about very well. And I guess that's something that they're going to be able to learn as well through this tournament.
For sure, for sure. I mean, the pressure situations, how to handle them, and then later on be in such a good position that you can get the, like a split percentage of the prize pool. Because first and second, these are the only two places where the money is going to be flowing. Other than that, whoever is going to be playing and is going to get knocked out, they're going to get just experience, which is good, which is good. Until unless you try to refine you rectify your mistakes, refine your gameplay, and then come back again with some really good motivation. But for now, let's actually just dive into the game, Hana. I'm super pumped, super excited, and it's your first favorite map. Yes, we're starting all the way on Inferno, and I'm gonna be pretty excited to see कि यहाँ पर कौन जीतता है. In the end, it's definitely gonna be about who wins and not about who wins the prize money, because the money is Oh just to no. keep count. The winning is a different thing. But look at that. Meow Meow just goes in and just shoos everyone else away. That could have been better. That could have been better. Meow Meow, on the other hand, they were like just rushing down archers, not even caring who's there towards that corner. But at the end, the way the recovery just came in, just wow. It absolutely did feel like that, but the start of the next round does not look as good. Let's see what's gonna go in this time around. Meow Meow has already lost a player, and now it's me survives with the Wow. shotguns. I don't know how that survival happened. Like how? It's just sheer skills. It's just sheer skills. I mean, at this point, I was thinking that Indeed might easily get this frag, but he was so clueless, checking all of those other corners towards smaller pit and greater pit. But ultimately, the shotgun shells, man, they scatter. एंड इसी के बीच में अगर वो स्पॉट भी कर लेते तो आसानी से जीत पाते. बट देखा जाए तो कोई भी खिलाड़ी यहाँ पे एक जिस बोलते हैं अवेयरनेस नहीं रख रहा है. रिजलर ने यहाँ पे एक फैक्ट जरूर लिया है. इट्स अ 1v2 सिनेरियो, बट ठीक है. इट्स मी दिस टाइम. द शॉटगन पावर, द पंप एक्शन, इट्स नॉट गोना बी वर्किंग. वेल शॉटगन का तो काम नहीं आया यहाँ पर, लेकिन राउंड्स की बढ़त जो ऑलरेडी बना के रखी है म्याओ म्याओ ने, वो कहीं ना कहीं टीम म्याओ म्याओ को फ्रंट फुट पे रखने जरूर वाली है इस मैच के अंदर. बट लेट्स सी हाउ लॉन्ग दे कैन कैरी दिस लीड, बिकॉज टीम फोरम जस्ट क्लाइंबिंग राइट बिहाइंड देम. 3 rounds into the game, we're already seeing a split score. वेल आर्टिस्ट की तरफ जाने की Wild. कोशिश, थोड़ा बहुत एक्सप्लोरेशन चल रहा है. एंड दे जस्ट डायरेक्टली गोइंग इन फॉर द प्लान, एंड दिस इज वंडरफुल. ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कामयाब कर रहे हैं, मुकम्मल कर रहे हैं. इट्स मी यहाँ पे डीगल मारने की कोशिश, बट M4 का स्प्रे आता हुआ, and it's gonna take the first frag. It's me being the last man standing. He's not gonna stand right in front of the P90. Guns blazing, and diffusing is on the go. E, press E to diffuse. Oh yes. This is going to be one of those unique matches, Azora, in which we see that the counter terrorists split pushed the site. If I ever say that to anyone and they don't have context, they're going to think that I'm literally bluffing and probably even think that Yeah. I don't know the game and don't understand how it's played. But that's exactly what happened. True that. It's like one of those students saying that, you know what, my cat ate the assignment. And it's actually his cat who just tore his assignment. It's like those moments. And it's me थोड़ा वो ट्रांसफर यहाँ पे करने की कोशिश, but the flashbang, I don't think so. It's gonna be good. Rizla आगे बढ़ेंगे, एक फ्रैग ले जाएंगे. And King Caramel, इकलौता खिलाड़ी बचते हुए with the green beast. लेट्स सी क्या सिचुएशन यहाँ पर रहने वाली है. म्याओ म्याओ Okay. अभी भी they're trying to save themselves, but it doesn't seem like there's gonna be enough opportunity. However, I do think दोनों players एक साथ push कर सकते थे, but कोई बात नहीं, सिंगल player ने कर दिया है काम, and indeed will indeed be able to carry forward another round into the sides of Team Forum. टीम फोरम, आई डोंट नो, टेक्निकलिटी पे ले जा रही है यहाँ पे. डाउन टू द वायर आ चुका था एंड इजीली डिफ्यूज भी हो जाएगा. But yes, like the amount of situations that have been created over and out. म्याओ म्याओ अच्छे बाइज लेके आ रहे हैं, वेपन्स लेके आ रहे हैं, बट उस वेपन का फायदा तक नहीं उठा रहे हैं. एट वन पॉइंट जब वो बॉक्सेस के ठीक पीछे थे, ही टुक आउट हिज ऑप एंड ही वाज एमिंग एट द राइट डायरेक्शन. बस एक फ्लिक,
एक फ्लिक और उनको फ्रैग मिल जाता। बट नहीं, उन्होंने अपनी ग्लॉक निकाली और ब्लॉक के अराउंड क्रूज करने लगे। रेसलर फ्लैश जरूर हुए थे, इट्स मी यहाँ पे एक फ्रैग काउंटर फ्रैग जरूर ले जाएंगे। इंडिया इकलौते खिलाड़ी बचे हैं, कैसे ना कैसे जंप करके पहुंच चुके हैं अपने सेफ्टी स्पॉट के पास। देखते हैं किस तरह से यहाँ पर इट्स मी आगे बढ़ते हुए नजर आने वाले हैं। ही करंटली डज नॉट नो द पोजिशनिंग एंड विल गेट कॉट राइट देन एंड देयर। इंडीड काफी अच्छे तरीके से एक और राउंड टीएफएम की झोली में ले जाते हुए इट सीम्स लाइक सारी जो प्रेयर्स हैं फ्रॉम द साइड ऑफ टीएफएम उनको आंसर करने के लिए आए हैं इंडीड। वेल, प्रेयर्स का तो पता नहीं, बट कोशिश बहुत अच्छी चल रही है उनकी तरफ से। टीएफएम पहले एक डगमगाते हुए स्टार्ट पे थी, बट अभी जिस तरीके से उन्होंने एक कमान संभाली है, दैट्स बीइंग रियली गुड। लेस्लर अभी भी आगे बढ़ के खेल रहे हैं। इट्स ओनली वन प्लेयर इनसाइड द साइड प्लेइंग द पिट एंड ही इज गोना गेट द फर्स्ट फ्रैग हियर। किंग कैरामल सैडली हैज टू डिपार्ट एंड इट्स मी इकलौते खिलाड़ी बचते हुए। अगेन नोवा अपने हाथ में रखा हुआ है शॉटगन, इतने लंबे रेंज तक नहीं चलेगी, ग्लॉक ही निकालना पड़ेगा। शॉट्स आगे जरूर है, बट इसके खुद के टीममेट रिजलर पीछे मुड़ के देख रहे हैं कि मेरे को शॉट लगाया तो लगाया किसने। वेल उन्हें पता चल चुका है एंड उन्होंने उस शॉट का बदला भी ले लिया है। Putting themselves at 5-2, the scoreline has shifted all the way towards the side of TFM. जिस तरह से टीम फोरम धीरे धीरे करके अपने लिए राउंड्स बटोरती जा रही है, इट डज सीम लाइक म्याओ म्याओ का स्टार्ट अच्छा था, बट दैट्स अबाउट इट। अब उनका स्टॉप भी आ चुका है। बस थोड़ा बहुत नियंत्रण रखो और हो जाएगा, क्योंकि AK-47 का जो स्प्रे पैटर्न है ना आना, इट्स जी। ह्यूमंगस। इट्स लाइक वन क्लिक एंड आप पता नहीं मार्स पहुंच जाओगे। तो यही चीज कंट्रोल करने के लिए इट्स मी को ध्यान देना पड़ेगा। 69 मात्र 69 एचपी के साथ थे, बट इंडीड M4 के साथ लगातार किल पे किल निकाले जा रहे हैं। इन दोनों का वेपनरी चेंज हुआ ही नहीं है। टीम फोरम हैज स्टक टू P90 एंड M4 राइट फ्रॉम द सेकंड राउंड। आप सोचो किस तरीके का दबदबा है ये। Well, absolutely crazy is the kind of gameplay that we're seeing from the side of TFM. Abzura, I cannot believe that जिस तरह से हमने स्टार्ट देखा था, कहीं ना कहीं you know me, right? That मैं हमेशा नाम जी। के बेसिस पे टीम चूज कर लेती हूँ because this is one of those platforms where you don't have a lot of data about the players. मैं म्याओ म्याओ चूज करने वाली थी फर्स्ट दो राउंड्स के बाद ही. That's how strong the start was. But it's just falling Well, down from there. well, I have another question for you, Anna. Are you a cat person or a dog person? Why not both? नहीं, अगर आप कैट पर्सन बोल देते तो फिर आई वुड हैव बीन लाइक ठीक है, माय कंक्लूजन वाज राइट कि आप म्याओ म्याओ को ही चूज करोगे। बट राइट नाउ दे हैव वन द पिस्टल राउंड इन द सेकंड हाफ, तो कुछ ना कुछ कर कर दिखाएगी ये टीम, मुझे ऐसा लग रहा है। Absolutely, absolutely. Gotta see how they pull this off though. जिस तरह से अभी सिचुएशन बनी हुई है, दोबारा से एक एक्सप्लोसिव स्टार्ट मिल चुका है टीएफएम को. दूसरे ही राउंड में हारने की नौबत आ चुकी है म्याओ म्याओ को। शॉटगन जरूर है, दागना जरूर चाहेंगे, हेडशॉट मारा है, बट लॉन्ग रेंज में क्या कर पाएंगे। इट्स ऑलवेज गोना बी द गलेल, द AR who prevails victorious against these shotguns. And टीम फोरम बस एक अंक दूर है मैच पॉइंट पे, और 2 अंक दूर है इस पूरे के पूरे गेम को खत्म करके अपने नाम ले जाने के लिए। वेल इन 2 कदम के फासलों में कितने अड़ंगे लगा पाएंगे टीम म्याओ म्याओ के प्लेयर्स, ये देखना यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है. नजर हटी, दुर्घटना घटी, टीममेट की तरफ क्यों देखने लगे थे जनाब आप? उन्हें थोड़ी ना बचाना था, बट ठीक है. राउंड एज लॉन्ग एज आपको मिल गया, आपकी गलतियां माफ. देखिए, चलिए, बोलते ना सात खून माफ। यहाँ पे बहुत सारे राउंड्स यहाँ पे बख्शने पड़ेंगे फॉर म्याओ म्याओ टू इवन रीच द स्कोर लाइन। 3 राउंड्स की देरी, देन उसके बाद हम देखेंगे थोड़ा बहुत ओवर टाइम का एक्शन। इट्स मी फमास को लिटरली ऐसे यूज कर रहे जैसे अपने ही अंग का एक वो हो, पीस हो, एंड ही इज जस्ट प्लेइंग सो वेल। ऑल ऑफ अ सडन सीटी में आते ही जागते हुए नजर आ रहे हैं ये। That's true.
कहीं ना कहीं अपनी वेपनरी को अपना एक्सटेंशन बना चुके हैं एंड बाय एक्सटेंशन उनका परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है. However, now that he's again left alone to fight with two people on his opposite side, it's definitely not me. इट्स बी अगेन फमास एक्शन. कितना ही दिखा पाएंगे. इंडीड इस वक्त कंट्रोल फायर कर रहे हैं. ही इज लाइक आई डोंट वांट टू स्प्रे एनी मोर. आई डोंट वांट टू मेक अ मोनालिसा, बट आई एम डेफिनेटली गोना हिट राइट ऑन टू द टारगेट. थोड़ा टाइम लिया एंड टीम फोरम दे आर बैक ऑन इट अगेन. एक राउंड दूर हैं जीत हासिल करने के लिए एंड इसका सहारा शॉटगन के ऊपर निर्भर है. Less is more. That's what Rizzler showed the last round, and this time I want to show. I want him to show that again. Let's see. Nice. Will he be able to again use some of his skills to get a frag What? with that? And he does. But Indeed? indeed, ने Rizzler को ही मार दिया. इंडीड लगता है कि थोड़ा बहुत एम प्रैक्टिस करके आए हैं कि अगर खिलाड़ी उनके सामने चार्ज कर रहे हैं तो अपने टीममेट को भी साथ में ले जाएं. -300 तो ऑलरेडी लेके चल रहे हैं एंड दिस विल डैमेज द इकोनॉमी. म्याओ म्याओ हैज अ फाइटिंग चांस एंड अभी भी किंग कैरामल ही इज नॉट इन्वेस्टिंग ऑन एनी ऑफ द गुड वेपन्स. ही हैज 8000 इन हिज पॉकेट. 8000 लेके घूम रहे, लेकिन अभी भी कोई वेपन नहीं है हाथ में. ड्रॉप कर सकते थे अपने दोस्त के लिए, बट ठीक है ना. तो ना ही सही. 5-7 के साथ इट्स भी आगे बढ़ रहे इतनी एग्रेशन के साथ कि उनको पता था कि ही इज गोना मीट हिज फेट एंड टीम फॉरम विनिंग इट बाय स्कोर लाइन ऑफ 9-6. आना म्याओ म्याओ तो टाई टाई फिस हो गई. Nice one, Azura. But yeah, pretty rightly said. Like Meow Meow जिस तरह से start किया था ऐसा लगा था ये बिल्ली बहुत जल्दी शेर बनने वाली है. But as you mentioned, उनका तो यहाँ पर tie fish हो गया. However, I did love the way Indeed and Rizal showed up for each other, except for that one time. That one time. जी जी. आई मीन Indeed ने Rizal को मिड की तरफ मार कंट्रोल दिया. लेने की कोशिश थी. एक खिलाड़ी नाइफ लेके एग्रेसिवली आगे पुश कर रहे थे. एम भटका, दुर्घटना घटी. So that was the entire thing, and that's what happened. But overall, the way the entire thing went in, I mean, Team Forum came in prepared. उनके पास कुछ ज़्यादा चारे तो नहीं थे, but यही चीज़ थी कि टीम म्याओ म्याओ इस तरीके से मतलब खेलना चाह रही थी. It was very unorthodox, and they couldn't get the grasp of what they need to do. Every single time they were coming towards a site and planting, but I guess that's not enough. That's not enough at all. Exactly. There's a lot of stakes and a lot of work that needs to be put in to make this a successful run. However, ये आगे वाली teams कितना successfully run कर पाती है वो देखने के लिए we will run towards a short little break and see you on the other side.
Well, ladies and gentlemen, welcome back. Right after a short little break, the intense action for the map 2, match 2, is soon going to begin. Ahana, what is your take on the second game? Well, the minute it starts, I'm gonna be waiting for it to go better than the last one because last time we did see a great start from the side of Meow Meow, and I did want them to, show the kind of performance that a team with a random name should. They could not, thanks to their opposite team, Team Forum. But yeah, this time around, I am gonna hope for a much closer match because again, even this time we could see Meow Meow was trying to make a comeback, but it was pretty evident that that's not gonna be a successful attempt. I want to see Yeah. one where we're left wondering what's gonna happen. Well, those kind of games are soon going to come. Right now, all the bifurcations is going on. I mean, all the good teams are going to come up, and then later on, we can see a really good competition. But तब तक हम थोड़ा बहुत अपने imagination को भी दौड़ाना बंद करते हैं, and then just enjoy the moment, live it in, see how it's going on, and just hope that it's not going to be Inferno again. Why would anyone ever hope that? आई मीन इन्फर्नो एक ऐसा मैप है ना लाइक हमने पिछली बार भी देखा था आई एन व्हेन मी एंड दर्शता वर कास्टिंग एंड इन्फर्नो वाज वन ऑफ द मैप्स वेयर एवरीवन वाज पिकिंग सो इट्स लाइक अ कंफर्ट मैप फॉर every single team. So I want them to step outside the comfort zone and then try and pick those tricky maps. Vertigo, Overpass, Nuke, and that's pretty much it. These are the four maps in the map pool. That's all, guys. Folks, what are you expecting? More maps? No, not so soon. It's just in the midst of all of this experimentation and then evaluation. And then once all of that is done, we can see more maps. But yes, I'm hoping that it's going to be Overpass soon. Because in Overpass, you need a lot. You need a lot of utility, like hell-bent utility centric map is what I'm expecting. So that is one of those. I definitely agree on that. Overpass does give a lot of room for utilities. Plus, it also has a dedicated, spot for sniping from. And I'm definitely going to want to see True. some of that action because even though it's very few rounds in a half, if you do have a dominant side for yourselves, then I guess being able to exploit that and going for the heavy weapons, even if it's Yeah. expensive, is going to be fun to watch and fun to play with. True. I mean, all of those players like just trying to hope for a better future, for a better half. When they once they're in the CT side and once they go towards terrorists, then that's where the actual drill begins. So I'm hoping those kind of challenges are going to be faced by all of these teams. And ऐसे ही अगर challenges जब हम देखेंगे ना teams को face करते हो तब जाके ना game और ज़्यादा मनोरंजक हो जाएगा. And people are going to start bringing in those strategies, throwing in those flashes at the right time, going for booster jumps, getting information, going over barrels, pillars, जो भी है power house positions overpass के उनको जाके एक्सप्लॉइट करेंगे बट ये सब बातें ओवरपास की हैं बाकी मैप्स भी हैं इन द मैप पूल इन द मिस्ट ऑफ इट दिस वर्टिगो में आपको पता ही है खतरों के खिलाड़ी बनना पड़ेगा अगर आपको एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग कूदना पड़ेगा तो या फिर पीटर पार्कर बन जाओ बट नो ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर जस्ट साइड detour where people just try to enter towards side B with just two focuses, 2 points, which is A towards mid and B towards pit. तो ये दोनों जगह से अगर आपको साइट के अंदर घुसना भी तो थोड़ा बहुत आपको स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेगी एंड यही चीज मैं देखना चाहता हूँ कि किस तरीके से टीम कोप अप करेगी आना. Absolutely. And Kaibar, we have seen the CT players going aggressive in maps like Vertigo and just, accumulating more and more space for themselves, leaving no room for the terrorists to actually enter in from. True. That's pretty well, executed map from the side of CT if you really watch carefully. So I guess Vertigo देखने में भी मजा तो आएगा. जी. Nuke has very fun elements to it. There's vents, there's the whole ramp, and it's pretty interesting how all those elements can be used to make a set play. But then again, I don't like Nuke though. चलिए कोई बात नहीं अगर आपको न्यूक पसंद नहीं है तो सीधे आपको वर्टिगो की तरफ लेके चलते हैं सीम्स लाइक देयर इज सम काइंड ऑफ हिकअप दोनों के दोनों टेररिस्ट अब तक हिले नहीं है अब जाके हिले डुले हैं हरी जान चुके कि उनके हाथों C4 है एंड धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं छोटे छोटे बेबी स्टेप्स ले रहे हैं फाइनली movement unlocked
And it's gonna be the staircase which they're gonna first move ahead, move towards mid, and then try to seize control towards the side. वेल मिड तक का एरिया तो यहाँ पर अपने कब्जे में ले चुके हैं एफएलबी, लेकिन Ouch. आते ही शुभ आरंभ हो चुका है एंड शगुन का पहला फ्रैग ऑलरेडी ले जा चुके हैं टीसीएस. वेल कुछ मीठा हो जाए. किल शॉट उसी मीठे की कोशिश पे है एंड ही इज गोना गेट दैट. हरी की बॉडी देखी नहीं कि दाग दिए दो शॉट्स ठीक ऑन टारगेट. एंड दैट्स हाउ द फर्स्ट राउंड वेंट इनटू द रोल इनटू द पॉकेट्स ऑफ टीसीएस. ज्यादा ही यहाँ पे रिहर्स करके आए हैं एंड किल शॉट ही इज वेरी वेरी गुड विद हिज यूएसपी. एंड व्हाई नॉट. आई मीन आपके पहले राउंड में आप सिर्फ केवलास के ऊपर ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. आप हेलमेट्स नहीं खरीद सकते. तो यूएसपी इज वन ऑफ दोज वेपन्स व्हिच कैन इजीली इजीली शैटर एंड गेट फ्रैग्स फॉर यू. वेल ट्रू दैट. काफ़ी अच्छे से अपने आप को एक अच्छी पोजीशन में लाने की कोशिश की गई थी फ्रॉम द साइड ऑफ फ्लाइंग बुलेट्स, बट वेल पहला राउंड ऑलरेडी जा चुका है टुवर्ड्स टीसीएस एंड देव आल्सो गॉन फॉर अ टैक्टिकल टाइम आउट. प्रिटी श्योर बहुत ही ज़्यादा गंभीर डिस्कशंस यहाँ पर शुरू हो चुके होंगे ऑलरेडी टीसीएस के प्लेयर्स के बीच में. किलशॉट एंड डेव्स मिलके अभी विचार विमर्श कर रहे होंगे कि किस तरह से दोबारा से धोबी पछाड़ किया जाए फ्लाइंग बुलेट्स का. फ्लाइंग बुलेट्स की तरफ से आती हुई बुलेट्स को किस तरह से डॉज किया जाए. ये सारे वेल डिस्कशंस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आगे के गेम के लिए. डेफिनेटली ये भी थोड़ा बहुत अभी मैट्रिक्स में जाना चाहेंगे. ट्राइंग टू डॉज दोस बुलेट्स एंड टीम कैंट्स. पहला ही राउंड तो कर दिखाया इन्होंने. अभी कैंट्स किस बात के लिए लिखा हुआ है आई हैव नो आइडिया. बट ठीक है, मैच पावर्स पे है. And I believe they have the money to get those weapons to get an early head start. And on the other hand, flying bullets, थोड़ा बहुत यहाँ पे shaky start ज़रूर है. And they are not even caring about it. They directly went and brought the AK-47s, Tech 9s with just a mere nade. तो मुझे इन लोगों का strategy नज़र तो नहीं आ रहा है क्योंकि as long as I can see Hana, it's like their money is going in vain because CTs can easily hold all of those positions with just perfect pixels, perfect angles, until unless you have some smoke or flashbangs in your pocket, which I don't see any. एब्सोल्युटली. एंड कहीं न कहीं यहाँ पर जो स्ट्रैटेजीज़ डेवलप हो रही हैं फ्रॉम द साइड ऑफ टीसीएस, वो काफ़ी यूज़फुल रहने वाली हैं उनके लिए. बट अगेन एज़ यू मेंशन्ड, जिस तरह का एक्सपेंस वो कर सकते थे उन्होंने किया नहीं है. सो नाउ आई वांट टू सी कि ये जो हल्के बाय के साथ घुसने की कोशिश रही है, इसका कितना रिवॉर्ड मिलेगा इस टीम को. हल्का फुल्का बाई जरूर है. किल शॉट बहुत क्लोज खेलना चाह रहे हैं, अप क्लोज एंड पर्सनल. एक खिलाड़ी को देखा पास बाय करते हुए, एक को तो धरा धरा ही धरा, लेकिन दूसरे को भी बहुत शानदार तरीके से रिफ्लेक्स के ऊपर खेल रहे हैं. ही इज जस्ट देयर. पिछले राउंड में 2 फ्रैग लेके इस राउंड में भी 2 फ्रैग लेके गए हैं. 2 बार एमवीपी ऑलरेडी जीत चुके हैं. मुझे लग रहा है ही इज गोना हैव अ कंटिन्यूअस स्ट्रीक ऑफ एमवीपीज. Well, I would say don't jinx it just yet. But okay, I agree with you. I agree with you. काफ़ी ज़्यादा खोए खोए लग रहे हैं एफएलबी के प्लेयर्स. इनकी जो फ्लाइंग बुलेट्स हैं वो आसमान में इतनी ऊपर आ चुकी हैं कि अब सब कुछ धुंधला धुंधला सा है. वेल ये बढ़िया था. थैंक यू. बहुत घंटे लगे मुझे ये सोचने के लिए. आई वॉज थिंकिंग अबाउट इट हम सिंस 12 years ऑफ माई लाइफ. हाँ, मुझे लगा 51 सेकंड्स लगे होंगे. नहीं नहीं, took me 12 years and now finally I got the moment when a team named Flying Bullets finally showed up and I could use that line. वाओ. बट अभी के लिए क्रैप वर्क करते हुए नजर आ रहे थे. द फ्लैश बैंग इज गुड. ओह माय गॉड. एंड डेव्स, he's just there present at the moment getting all of those frags. एंड अभी के लिए इन्होंने वेपन भी रिट्रीव कर लिए. कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है इनकी तरफ से, मात्र केवलार हेलमेट और यूटिलिटीज. बट ऑन द अदर हैंड, फ्लाइंग बुलेट्स आर द वन हु इज लूजिंग लिटरली एवरीथिंग डाउन टू द सेकंड राउंड बाय व्हिच दे हैड गॉटन. लग रहा है कि सिचुएशन बद से बदतर होने वाली है इस वक्त. वेल, फ्लाइंग बुलेट्स को तो फ्लाई करने का मौका मिलेगा नहीं. एंड यहीं पे चाहे आप हों पापा की परी या फिर पापा की गोली, you're done for.
ये थोड़ा बहुत चूक गया, पर निशाना नहीं चूकेगा. स्प्रे ट्रांसफर, किल शॉट, गेटिंग द फ्रैग. And the biggest mistake here was moving towards the pit without any strategy. सीधे जाके पीक कर दिया. टेक 9 से एक शॉट भी नहीं लगे. एंड खलील के पास तो लिटरली 35 बुलेट होते हैं. 35. कितना स्प्रे करोगे और कर भी लोगे तो ऑब्वियस सी बात है यार, सामने का खिलाड़ी जो है वो तो खत्म हो ही जाएगा एट वन पॉइंट. क्या मतलब फ्लाइंग बुलेट्स को टैक्टिकल टाइम आउट की ज़रूरत है? और मुझे मिड काफ़ी की तरफ ज़्यादा कंट्रोल. डिफरेंस दिखाई दे रहा है प्ले स्टाइल में फ्रॉम द जी. प्लेयर्स ऑफ फ्लाइंग बुलेट्स। एक तो यहाँ पर बिल्कुल सहमे सहमे से अंडर कॉन्फिडेंस से चलते दिखाई दे रहे हैं, एंड उनके साथ में हरी एकदम जिगल कर करके इन्फॉर्मेशन बटोर बटोर के आगे बढ़ते हुए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हरी बिल्कुल बेट की तरह यूज़ करना चाहते हैं अपने विंगमैन को, एंड उसी बात की वजह से उन्हें खास कैपिटलाइजेशन के मौके ना देने की कसम खा रखी है उनके टीममेट ने। आई मीन प्लान अच्छा है, बट इफ दे गो फॉर अ ट्रेड, अगर ट्रेड नहीं कर पाए, ट्रेड पोटेंशियल नहीं बना पाए, फिर तो दिक्कत होने वाली है. राइट नाउ सिटी स्पॉन के पास पहुंच चुके हैं. Here's the information TCS has. They know that it is going to be a push coming from the back, and they're just holding it with the best player out there, kill shot. FLB अभी भी थोड़ा एग्रेसिव अगर खेल ले तो फिर एक फ्रैग तो मिल जाएगा. आवाज आई है कि लोग कूदते फांदते हुए आगे पहुंच रहे हैं, बट अभी भी कोई रिफ्लेक्स यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है. एक फ्रैग लिया, बट ये गलती कर ओहो। बैठे. सीधे के सीधे हाइट से नीचे गिर गए. एक बार साइड स्टेप अगर आपने किया, लाइक वी वर मेंशनिंग इन द अर्लियर टाइम्स, आपने अगर हल्की सी भी गलती करी अपने मूवमेंट में, आप सीधे खाई में गिरोगे. दो चार कदम पे हम थे, दो चार कदम पे तुम थे, दो चार कदम लेकिन ये कुछ मीलों से क्या कम थे? That's exactly what वाह वाह happened to the वाह. players in the last round. But well, this time around, किल ये जो भी शॉट. दूरी थी इसको नजदीकी में बदला जाएगा, एंड एक शॉटगन के दम पे अपने आप को एक और राउंड का विजेता घोषित करते हुए टीम कांट्स। टीम कांट्स मोर लाइक टीम कैन. ये सब झूठ है. कांट्स ऐसे लिखा हुआ है ताकि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो जाए पहले ही, और उनको पता चले कि ये लोग उतना नहीं कर पाएंगे. बट ठीक है, आर्म्स जिस तरीके से आगे बढ़े हैं, एक फ्रैग जरूर बटोरा है, बट इट्स किल शॉट who they're against with, and I don't think so it's gonna be such an easy fight. All that smoke screen for what? आगे बढ़ जरूर रहे हैं. फ्रैग लेने की पूरी पोटेंशियल, एंड लगता है कि जैसे ही टाइम आउट लिया उन्होंने एकदम चीजें अनलॉक कर ली अपने दिमाग की, कि अब से तो परफॉर्मेंस करना ही पड़ेगा, परफॉर्मेंस दिखानी ही पड़ेगी. क्या मतलब टीम कांट्स इन गेम गेम के साथ नाम में ब्रेन गेम खेल गई? फ्लाइंग बुलेट्स however does have an option to come back. पहला राउंड मिल चुका है, बहुत मुश्किल चढ़ाई है बट इम्पॉसिबल नहीं है। सो लेट्स सी कि क्या इस अनहोनी को होनी करने में कामयाब होंगे फ्लाइंग बुलेट्स के प्लेयर्स। फिलहाल होनी के बारे में तो मुझे पता नहीं, बट ये अगर नेड लेके ऐसे भागते रहेंगे आगे पीछे, फिर तो दिक्कत आने वाली है. एक खिलाड़ी यहाँ पे ब्लाइंड जरूर हुए हैं. एंड वेट, दैट्स जस्ट अ डिकॉय. दैट्स जस्ट अ डिकॉय. खिलाड़ी डिस्कनेक्ट हुए हैं. किल शॉट इकलौते खिलाड़ी बचे हुए हैं. एक फ्रैग बटो रहा है. वो सोच रहे कि मेरे टीममेट कहाँ चले गए, साथी कहाँ हैं. हरी अभी भी पीछे की तरफ से आगे बढ़ने की कोशिश, बट ही हैज एन AK-47. एंड जितनी देर तक मैंने देखा था इनका गेम प्ले, ही हैज टू बी वेरी वेरी कॉशियस अबाउट हिज स्प्रे ट्रांसफर, और इवन होल्ड हिज माउस डाउन. जमीन की तरफ देख के आगे बढ़ रहे थे, एंड मुंह की खाएंगे. वेल, जितने जितनी शिद्दत से वो ज़मीन की तरफ देख रहे थे उतने ही कन्विक्शन के साथ में उनको धूल चटाने में कामयाब रहे हैं टीम कैंस के प्लेयर्स। फ्लाइंग बुलेट्स जी. हाउएवर, दो और मौके रहेंगे इनके पास टू गो अहेड एंड मेक अ चेंज इन द ओवरऑल स्कोर लाइन।
बट अगर इन दोनों मौकों को गवा देते हैं तो फिर तो हमारे सारे व्यूअर्स इस बात के गवाह होंगे कि फ्लाइंग बुलेट्स यहाँ पर खास राउंड्स कलेक्ट नहीं कर पाई। वेल, घर जाके ये बोलना पड़ेगा कि हम फ्लाइंग कलर्स के साथ पास नहीं हुए। बट हाँ, अभी नाइस वन। जैसे सिटी जैसे सिटी साइड में गए होंगे आना, फ्लाइंग बुलेट्स के पास एक एज है। दे कैन गेट द इंफॉर्मेशन, दे कैन प्ले विद both the teammates being in one point, नाकाबंदी कर सकते हैं, ट्रेड पोटेंशियल इंक्रीज कर सकते हैं, दे कैन विन दिस राउंड, बट इट ऑल डिपेंड्स Can ऑन you, टू देम। sorry to cut you off, Hausura, but can you see the board? जी। Your safety is our वाओ। priority. This job site has suffered one injuries. Accidents are preventable. क्या मतलब फ्लाइंग बुलेट्स को अभी टेररिस्ट साइड पे आके ये पढ़ना चाहिए? पढ़ना तो चाहिए, और साथ में एक हेलमेट भी दिए है ताकि आप अपने सर को बचा लें। बट हाँ, कमिंग डाउन टू द पार्ट वेयर आई वाज टेलिंग कि फ्लाइंग बुलेट्स को जी। ये पिस्टल राउंड जीतना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर वो नहीं जीत यप। पाएंगे देन इट्स ऑल डन फॉर, क्योंकि टीम कैंस जिस तरीके से आगे बढ़ रही हैं, द वे दे जस्ट एग्रेसिंग एंड गेटिंग ऑल ऑफ दोस फ्रैग्स एज वेल, द एम इज गुड, राइट, द movement is good, the या mechanism is spot on. So I mean, they are playing with one of those edges which they've already gotten into this game, and flying bullets थोड़ा बहुत इस चीज में डगमगा जरूर रहे हैं। सी इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट हाउसोरा, मुझे ऐसा लगता है कि फ्लाइंग बुलेट्स की तरफ से कुछ तो नौसिखियों वाली गलतियां हमने देखी हैं, क्योंकि वर्टिगो जैसे मैप में इतनी ज़्यादा बुरी हालत अगर बहुत आपकी सारे। हो रही है तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। But what's interesting and what's something that gives me a lot of peace and, feeling of joy, even in this miserable scoreline for Flying Bullets, is the fact that अगर ऐसी मिस्टेक्स हो रही हैं उनकी तरफ से, मतलब वो नए नए वीडियो गेमिंग में आए हैं, मे बी दिस इज देयर फर्स्ट अटेम्प्ट, मे बी दे आर ट्राइंग फॉर द फर्स्ट टाइम of what the जी। taste of video games is like, and I'm happy to see more and more people investing their time and exploring one more field while they're sitting out there thinking about what can be done next. एग्जैक्टली, आई मीन ये फील्ड उतना जाना माना नहीं है, बट एक चीज़ बता दूं, इट्स वन ऑफ द थिंग्स विच एवरी सिंगल वन ऑफ देम डज। मैं खुद अपने इंजीनियरिंग के टाइम पे जैसे ही क्लासेस खत्म होते थे घर आता था, एंड आई यूज्ड टू स्टार्ट प्लेइंग, आई यूज्ड टू बूट माई पीसी, आई यूज्ड टू प्ले, एंड CS was one of the games which I used to love playing a lot. And that's one of those feelings, that immaculate feeling which you always get, right? That nostalgia. Right now, me casting this is giving that feeling. Ooh. I feel I've always liked you know not booting my PC to play, because if I boot my PC then I get booted in the game as well. So just joking, I do love playing. It leads me to a million deaths, but then there's million and one respawns after it. So Yeah. always a good thing. And plus one ways to respawn. Moving down. Anna, this can Potentially the possibly be last the round. last round. Yep. Yeah, definitely is going to be the last round. Kill shot already has initiated in such a good manner here. Hurry, on the other hand, good frags, but it's Devs who's going to come for the rescue. Team Cans winning it with a scoreline of 9-1. सो फार दे हैव मेड अ बेंचमार्क आना, एक बहुत बेहतरीन बेंचमार्क है ये 9-1 का स्कोर लाइन। अब तक हमने इससे पिछले वाले सिटी भी देखा था, आज के दिन ये एक बहुत अच्छा बेंचमार्क है फॉर अ टीम टू क्वालिफाई इन सच अ गुड मैनर। देखते हैं आगे के गेम्स कैसे रहने वाले हैं, बट यस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द गेम व्हिच वी रिसेंटली विटनेस्ड? I mean, I'm pretty happy with the way the overall thing panned out. Did see some basic, mistakes happening from the side of our newcomer team. बट मुझे जी। लगता है कि ये सारी चीज़ें गेम के साथ धीरे धीरे सीखने में आ जाएंगी, एंड जितना ज़्यादा खेलेंगे, जितना ज़्यादा एक्सपोजर प्राप्त करेंगे, उतना ज़्यादा उनमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा.
while they look for what can be their next spot to go ahead and get some exposure at, we are going to take a quick little break and come back with one more match for you guys.
All right, ladies and gentlemen, we are back with a short little break, and my hairs are literally having question marks in my head कि तीसरा मैप शुरू होने वाला है. हाँ, बहुत जल्द शुरू होगा. थोड़ा बहुत अभी असेसमेंट्स रहते हैं. Like all of these players have their own rigs, Ahana, and they are playing on ROG Strix Card 16. तो अभी जिस तरीके से हम सबका एक एक डिज़ाइन पेरिफेरल होता है, वी ऑलवेज लव टू ब्रिंग आवर ओन कीबोर्ड एंड माइस. सो ऑल दे डूइंग इज सेटिंग इट अप एंड सून वी आर गोना लॉन्च इनसाइड द गेम. बट on the third map, third game, we will expect something much more, at least not this worse than 9-1 score at least. I mean, वो तो एक बार ऑलरेडी सेट हो चुका है. मैं चाहता हूँ कि वो बार टूटे, एक्सीड करे, एटलीस्ट ओवर टाइम लेके जाए, थोड़ा बहुत एक्शन दिखाया हमें यार. CS2v2 अगर जल्दी खत्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? Well, absolutely. It's going to be pretty interesting to see how it turns out. But what I'm more interested to see is Overpass. क्योंकि Overpass का map मैं देखना चाह रही हूँ for a while. But now that the game is here, let's find out which one it's gonna be, and it's Vertigo yet again. Well, here we go to the vertigo. कोडेक्स क्या बात है. मैं इन खिलाड़ी को जानता हूँ. मैं इन खिलाड़ी को डेफिनेटली जानता हूँ. मैंने हाल फिलहाल में जब CS2 खेलना शुरू किया था दोबारा से आफ्टर CSGO, एंड आई वाज जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लोर सम थिंग्स एंड आई वाज लाइक गोइंग इनटू लॉबीज रैंडमली एंड जस्ट सीइंग कि किस तरीके से लोग खेलते हैं. एंड या कोडेक्स वाज वन ऑफ द प्लेयर्स व्हिच आई फाउंड आउट, एंड आई बिलीव दैट दे कैन ब्रिंग सम चेंज ओवर हियर. साइड की तरफ अभी जाने की कोशिश, उससे पहले थोड़ा डिटोर था. मॉली फैंका क्लियर करने के पूरे आसार में है. ताव, he is just bang on at this point. दोनों के दोनों हेड शॉट्स एंड खिलाड़ी को लिटरली चकमा दिया है. पहला राउंड टू गुड फॉर या अपने नाम करते हुए. Well, काफ़ी अच्छे तरीके से पहले राउंड को यहाँ हासिल कर तो लिया गया है, as you mentioned. But Too Good For Ya कितनी दूर तक इस चढ़ाई को कामयाब कर पाएगी, that we will still have to see. I do remember the name of Too Good For Ya though. हाँ, We saw them the last time around as well, right? nostalgic. Yes, yes, yes. Oh no, Codex. Wrong place, wrong time. वेल यही चीज़ रहती है हमेशा इन FPS गेम्स. आप लिटरली एक पिक्सल होल्ड करके बैठे हो फॉर मोर देन अ मिनट, एंड द मोमेंट यू लुक अवे, यू टर्न अवे, यू आर डेड बाय द सेम पिक्सल. सो आई डोंट नो, मेरे को हमेशा ये चीज़ बहुत अजीब लगती थी और अभी भी लगती है. Well, it's gotta be like that. I mean, जिस तरह से ये गेम अनफोल्ड होता है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी पैरालाइजिंग सिचुएशन बन जाती है टीम्स के लिए काफ़ी जल्दी, बिकॉज वन प्लेयर डाउन एंड यू आर ऑलरेडी ऑल व्हाट? अलोन. काफ़ी अच्छा गेम प्ले यहाँ पर दिखाया ज़रूर कोडे ने, लेकिन ही डिड हैव टू पास अवे ऑन टू दैट सिचुएशन, बट कोडेक्स वोंट बी एबल टू मेक द बेस्ट ऑफ द लास्ट. वेल, बेस्ट ऑफ द लास्ट तो पता नहीं, बट पिछला राउंड ताव जिस तरीके से भागते हुए आए, ही लिटरली फिनिश्ड एन एंटायर मैराथन. ही केम बैक, टुक द बेटन एंड इवन गॉट द टीम द W. एंड टू गुड फॉर या, दे आर ऑलरेडी वे टू एग्रेसिव. मॉली फेंकने की कोशिश, लेकिन उस मॉली के थ्रू अग्नि परीक्षा देते हुए ताव आगे पहुंचेंगे. एंड अपने मूछों को ताव देते हुए बोल रहे कि ये लो 4-0 करके आगे बढ़ रहा हूं. You already mentioned that हमें कुछ 9-1 से बुरा नहीं देखने को मिलेगा. I have my own doubts about it. New fear unlocked. Ouch. ठीक है, ठीक है. Thou wants to do them dirty now. Flash Fanka, and that was just a perfect pop flash to make a good set play. पिछला राउंड कुछ इस तरीके से बीता है, मात्र 5 सेकेंड और राउंड समाप्त. The way Tao is playing right now, he seems to just want to get done with this as quickly as possible, move on to the next round, and right to the prize money. ये तो गए. What? एक HP के साथ बचे थे. शॉटगन वे टू क्लोज चलाने की ही एक अपॉर्चुनिटी थी, एंड कोडेक्स सीज्ड इट, सीज्ड द मोमेंट. काफ़ी ज़्यादा स्नीकी पोजीशन में अपने आप को होल्ड करके रखा हुआ है ताव ने. अगर कोडेक्स गलत रास्ता चुनते हैं,
साइड तक जाने के लिए, तो बली हो जाएंगे। आई थिंक जिस रफ्तार से कोडेक्स भाग रहे हैं, ताव को अंदाजा आ चुका है कि इस जगह से तो कोई पुश नहीं आने वाला है, एंड soon he might be relocating towards the right fight as well. ताव लिटरली यहाँ पर डिसीजन मेकिंग दिखा रहे हैं अपना. He understood, if I'm going to be taking the ladder and reaching all the way from the pit, plant already हो चुका होगा and position भी बहुत बढ़िया ले ली होगी, but Ooh. कोडेक्स के पास ये शॉटगन अब तक रहेगी इसका उनको आइडिया ही नहीं था. हाँ, फाइनली एक राउंड Nice. जीत तो लिया है वड़ी वेलू ने. एंड आना लगता 9-0 तो नहीं देखने को मिलेगा. ट्रू दैट, 9-0 तो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन इट कैन स्टिल बी अ वर्स 9-1 देन बिफोर, क्योंकि जिस तरह से ताव सिंगल हैंडेडली भारी पड़ रहे हैं पूरी टीम पे, दैट इज स्केरी. बट लेट्स सी कितनी देर तक इनका ये जो रॉब है वो जमा रहेगा, बिकॉज इट सीम्स लाइक नाउ इवन ओ टू गुड फॉर हैज अ प्लान, बट द प्लान डज नॉट इन्वॉल्व रनिंग अराउंड विदाउट द वेपन इन हैंड, मैन. वेल अपने प्लान के साथ थोड़ी प्लॉटिंग नहीं कर पाए. लास्ट मोमेंट में इन्होंने 4 दबा दिया. 4 दे दबाया उनका 5 दबा दिया. आई एम सॉरी. एंड द C4 came out. Shotgun could have done a lot of damage than the C4. I mean C4 तो साइट उड़ा देता, बट शॉटगन एक बंदे को तो वो एक चीज सोच के चलनी चाहिए थी. एंड डेथ ही इज जस्ट रैम्पेजिंग फॉरवर्ड गेटिंग टाव. एंड गॉर्दे इकलौते खिलाड़ी बचे हैं, हैज ऑल द यूटिलिटी टू हिज नेम. कर सकते हैं एक बेहतरीन गेम प्ले, बट उनको वेट करना पड़ेगा कि खिलाड़ी एटलीस्ट मिड की तरफ जब पहुंचे तब नेड फेंके. बट थोड़ा बहुत यहाँ हेजी होगी इनकी डिसीजन. कौदे क्या कर पाएंगे इस वक्त. लेट्स सी क्या सिचुएशन बनने वाली है. अभी के लिए तो इस 1v2 में कोडे के लिए चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल है, बट ही हैज मैनेज्ड टू Oh! मेक इट इजियर. नॉट अ विनेबल सिचुएशन येट though. शॉटगन का फटका जब सर पे पड़ता है, इट्स लाइक यू आर जस्ट टॉसिंग ए हेड अवे. सो ये तो ठीक है कि गेम में इतना गोर नहीं दिखाया गया कि आपका सर धड़ से अलग हो जा रहा है, बट दैट गन हैज एन इम्पैक्ट. एंड इवन इन लॉन्ग रेंज, आई मीन मिड टू शॉर्ट रेंज, दैट वेपन इज एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल. बट अभी के लिए चलते हैं सेकेंड हाफ की तरफ. एंड टू गुड फॉर या, they're going to be the terrorists at this point. Guns out and they're heading directly into the site. Flashes हैं कॉडेक्स के पास, बट मौका नहीं मिलेगा उनको यूज करने का. Stav is going to repeatedly just shut down every single head he sees right in front of him. Well, it's been quite a round for the side of VDV. Let's see what comes forward. चैलेंजेस अभी भी बहुत ज़्यादा हैं, एंड अपने आप को दोबारा से गेम में स्थापित कर पाना थोड़ा यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहने वाला है. Oh no. Does not seem like there's much that can be done. Oh, Right, okay, I was wrong. I was so wrong. ठीक है, शॉटगन के साथ मरते हुए एक बार गलती कर चुके, बट दूसरी बार तीसरी बार बिल्कुल भी नहीं. ताव just held his ground there. And he was just waiting for the rush to come in to check all of those corners. Nova down, 10-4 down, every single thing down. And VDV, they are looking in a very beaten up shape. Wow. दिस हैज़ बिन क्वाइट अ क्विक मैच, एंड जितनी जल्दी ये मैच खत्म हुआ उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो कंपटीशन होने वाला है इवेंचुअली बिटवीन द विनिंग टीम्स फ्रॉम द लास्ट 3 मैचेस, दैट्स गोना जी. बी टफ. It is definitely going to be tough. Like I said, अभी तो सिर्फ एक लेयर निकल रही है, एक परत निकल रही है. जितने भी अच्छे टीम्स हैं वो ऊपर ऊपर धीरे धीरे आते हुए नजर आ रहे हैं. एंड दैट इज एक्चुअली अ गुड साइन, क्योंकि अब मूविंग ऑन, लाइक यू मेंशनड, द लास्ट 3 टीम्स व्हिच वी सॉ, दे आर प्लेइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग. अभी के लिए देखा जाए तो आगे जो कंपटीशन है वो बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है. इट कैन नॉट गो फॉर अ स्विंग ऑफ 9-2, 9-11, सॉरी 9-1 या 9-0. ऐसा कोई फैशन हमें नहीं देखने को मिला. अगर 9-2-11 होता तो और मजा आता, बट ठीक है, मेरे सपने सपने ही रह जाएंगे क्योंकि ओवर टाइम कोई दे रहा नहीं है हमें.
दैट्स ट्रू। ओवर टाइम तक तो बात जा नहीं रही है, लेकिन we're जी। still seeing quite a lot of impact coming in from one side of the team. It's one sided, so yes, there is one single team that is able to deliver. But जिस तरह का गेम प्ले हमें देखने को मिल रहा है, overall it is giving me quite a lot of hopes of future overtimes in today's day. सत्यवचन सत्यवचन एंड आई होप इट्स गोना बी द केस एंड आगे वाले गेम्स कुछ ज़्यादा ही मनोरंजक होने वाले, रोमांचक होने वाले हैं। एंड अब तक तो आपने जो देखा दैट वाज गुड, दैट वाज द वे लाइक ऑल ऑफ दीज न्यू प्लेयर्स आर कमिंग इन ट्यूनिंग इनटू CS2 एंड दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैकेनिक्स, understand how the entire movement system works in this game, and then even decide one of their roles as well, क्योंकि इस गेम में कोई भी रोल्स डिजाइन नहीं है। आपको अपना खुद का रोल बनाना पड़ेगा। या तो आप सपोर्टर बन जाओ जो लिटरली लाइनअप्स फेंकते हैं टू इनिशिएट द मूवमेंट, टू गिव द एज टू द फ्रैगर ऑफ योर टीम टू गो अहेड, get inside the site and get those frags, crucial ones. Or you can just go ahead and be one of those team players कि आप जैसे ही आगे मतलब रशर जा रहा है, you can help him out, or you can just stay down and just wait for the trades to be initiated. So all of these things need to be explored, need to be understood in this game. तो इसीलिए learning curve CS2 में बहुत ज़्यादा है, and hence we can see all of these new teams just trying to participate and understand how it goes. But अभी के लिए आना लेंगे एक छोटा सा break, मिलेंगे उस पार with the fifth game.
And ladies and gentlemen, we are back once again with the ROG Showdown series. I'm your host Azur, and alongside me is Ahana. Ahana, we have seen a load of matches today, and I guess we have come down to the final question: कि कौन सी team आप select करने वाले हो to be the grand Well, finalists? I guess there's more before I can make that decision, to be honest. But agar abhi ke liye randomly I had to choose one, it would be too good for you. I mean, just because they're the veteran, or is there any specific reason why? I mean, I loved the way they played, obviously, first of all. And then, second of all, I kind of remember seeing them play before, and they were good then, they're good now. And they're definitely too good for their opponents. That's right. I mean, yeah, I guess even I would select the same team. I mean, that's, I guess, the first time we both are going to choose the same teams. But yeah, coming down to the way they play, it's very, very good. I mean, the movements are great, and the understanding of how the opponents are also playing this particular map, that also was really good. But Team Cans versus TFM is going to be the next matchup. And in the map of Overpass, let's see who takes whom. Gonna be quite a crucial match because whoever wins here gets to move forward into the game. Right now, the push is coming in from the side of TFM, and TCS already ready for the fight. I'm seeing quite some action right now. Okay, noted. Devs is literally trying to unload all of his 30 bullets from the mag. But yeah, in the midst of it, he was successful, got to frags, and team for him, they're already onto a very shaky start. But TCS, good, confident as always. Killshot, on the other hand, he has invested on the SMG, and long range fights can be an easy task for them. Seems like the Galils have come from the corners of TFM as well. Shotgun, impromptu, devs, just holding the line of sight there. But he's still expecting a push coming from connector as well. Well, Devs has taken quite a lot of damage, and I don't think he's going to be investing into a position of risk anymore. The fallback is coming in from his side, and now they're just going to wait for the attack to start from the side of TFM because once the terrorists start moving in, that's when a good close range off angle position will benefit Team Cans. Good start, good capitalization, and now that the information has been relayed to the players of Team Forum, I don't see the right crosshair placement for the remaining player, and Captain Forum will get taken down as a result. Well, I believe the IGL himself is not ready for this fight. Team Kans, even though they're just holding some line of sight, they just know that at one point this angle can be pushed. They're just waiting with just sheer game knowledge, and it's working out for them. Again, devs, he's still having the shotgun just ready. And the moment people just pour in towards pipe, they're gonna be blown away. They're gonna be taken down. And Captain Forum has nowhere to run, has nowhere to hide. Sadly, he has to depart as well. Well, the way this game has gone, it definitely gives you a hint of this going the same way the last match of Team Gans went, giving them a good start and also, continuing on the same momentum. Sir Crackshot, nice name, but I'm not seeing many shots being taken from his side. I mean, the shots are coming, but they're not cracked, is what we can see. But Killshot through the smoke just knew where the position is of Captain Forum, and he is successful in taking him down. The last man standing, Sir Crackshot with the gullet in his hand and nowhere to go. Just a single weapon which he has invested over and out. Can he do? Trying to go through. Did manage to get the first kill there. And Devs, he's all alone with this situation. Still doesn't have the Well done. information. Player has gone ahead. Yep, Devs has found himself in a 1v1, and right now it does seem like Sir Crackshot might have a good shot at this.
It did feel like he was gonna be one with the better weaponry, with the better point in the fight, but Devs just went berserk with that shotgun. True. And it's just that the C4 was not retrieved at all in the previous round. And I did see Captain Forum going down, but so crack shot didn't take the initiative of bringing the C4. That's the objective. That's how you can actually pressurize the CT to be in an uncomfortable spot. But the shotgun still comes in, chiming. Ooh. Devs, he is there, having the perfect presence of mind. Still through the smoke, Captain Forum cannot see what's happening and kill shot, having the What? perfect angle onto the opponent. No matter how much you scope onto him, he'll still get the first shot. This was sad. This was sad for the side of Team Forum. After having achieved yourselves the first match, putting yourselves in the second round, and then seeing yourself lose the way they are doing right now, it takes courage. It takes a lot of courage. Team Forum, yet again, though, ready for the fight, walking in and then walking out as well because the shots on Dev, they're just crisp. Crisp and accurate. So crack shot. He's on a hunt. He's on a mission to go and retrieve the C4. Did get the first frag there, but kill shot is all ready. He's just holding the grill right there. What can he do? Getting way too close, personal, and he's still managed to get those shots. Wow. 20 bullets in that mag, and surprisingly, he has managed to hit all of them. Beautifully done, beautifully done. This was a crucial round for Team Forum. They could have finally found themselves a win. It seemed like even Killshot was gonna get caught in a vulnerable position, but the way he got back on his feet, that's pretty amazing. Well, the bounce back, the comeback needs to be even stronger, even harder. TCS, they're not even putting any of it now. They don't have to worry about coming back because the amount of score they have already made, it's leaps and bounds, 6-0. TFM, they're struggling, and right now backtracking their position all the way towards the spawn, and then they're gonna head from monsters. They have the man count advantage, but here's one thing. Devs is having that AWP in his hand, which means one shot, one kill. Well, Devs and his beautiful aim skill. It's gonna be hard to stand against that. However, I do believe that Overpass is one of those maps where you can already have a lot of room to sneak around and have Oh, closer fights. That's exactly what happened, and this is what I was scared of for Devs. He did get taken down because he was not in the position to take a fight in that close range. true, close range. I mean, you can go no scope all in, but the chances of hitting that shot is actually very much going to be dependent upon how accurate you are, how calm you can be in such pressurizing situation. And once so crack shot is right in front of you, the man who's popping from the corners of TFM, definitely you ought to give it to this man. Still deciding on where to push from, so Crackpot is gonna go all the way and maybe scope out the area before he invests into a fight. Slight bit of damage there. The ladders were the best option, but so Crackshot wants to do things in a very jittery manner. The idea here is to pencil from two different situations, two different location, but all right. Hitchhiking. There we can see Captain Forum also joining the forces, joining the arms with the brother. And TCS anticipating, awaiting, getting anxious to where the opponents are going to be. Shotgun and silenced M4. Good nade there. Did chip off some amount of damage. Kill shot. He's still on the feet, ready to get those shots clicked right into.
captain for him, and that's it. There it is, 7-1 first half. Well, two more rounds is all it is gonna take for TCS to win. Will Team Forum be able to push this any further? Will they be able to find a win here? बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट पॉसिबल है. एंड इस पॉसिबिलिटी की उम्मीद को लेकर टीम सीएस के अगेंस्ट खड़ी हो चुकी है टीम फोरम. And now that they are on the counter-terrorist side, it should be slightly easier. No, it isn't. देखिए सिंपल तब होगा ना जब आप अच्छे तरीके से होल्ड कर पाओगे साइड को. यहाँ पे देखा जाए तो टीम फॉरम इज नॉट इवन प्रिपेयर्ड फॉर द अमाउंट ऑफ पुशेस व्हिच आर गोना कम फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑफ टीम कैंस. आई मीन प्रीवियस राउंड इटसेल्फ बी शॉट की तरफ दोनों के दोनों खिलाड़ी आए थे. दे स्प्रंग अपॉन, इंफॉर्मेशन रिले नहीं करी, एंड दैट्स वेयर टीएफएम लॉस्ट. Right now, again, it's gonna be the same story. Shotgun from such far range, and it hits. It all hits onto those heads, onto those bodies. 9-1 के scoreline के साथ, Team Cans, they're just aggressing forward, Ahana. They're just moving They are. like a spearhead. There, they are. Yep, it does seem like Team Kansas is definitely finding themselves in one of the best spots overall in this tournament today. But yeah, I'm interested to see how Team Cans versus Too Good Foya is gonna be. That's what I'm hoping for. राइट. आई मीन हमारे होप के सामने तो अभी एक ही टीम टिक सकती है, टू इजी फॉर यू. एंड आई बिलीव टीम कैंस के लिए वो एक बहुत अच्छा तगड़ा मुकाबला होने वाला है उनके विरुद्ध. बट देखेंगे किस तरीके से हर एक चीज़ जाएगी, क्योंकि राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज जितने भी अच्छे टीम्स थे वो अभी आपस में भिड़ेंगे. एंड right after that we can see the competition coming in very strong as well. Overtimes की अभी भी मैं anticipation लेके चल रहा हूँ. I'm just hoping that it's gonna be seen real soon. But yes, थोड़े बहुत अभी अवसर और देखने को मिलना चाहिए हमें कि किस तरीके से टीम्स आगे बढ़ रही हैं. Absolutely, and इन अवसरों का हम वेट करेंगे ज़रूर, लेकिन छोटे से ब्रेक के उस पार. See you on the other side.
All right, ladies and gentlemen, welcome back to ROG Showdown series. I'm your host, Azura Aiden, and alongside me is Ahana. Ahana, well, we are entering towards the first semifinals, and I believe that our Warriors, too easy for you, they're going to do something much good here.
Hopefully, we'll see how it turns out because, to be very honest, I'm definitely looking forward to see how the game is gonna, keep fueling more and more power inside of it because the way the last match went, I am still looking for more. I'm still looking for more because I was expecting quite a tough competition between the two teams because they are already, graduated themselves from the first round. But yeah, now I'm waiting to see what happens next. It's like the hunger, right? Once you just know that this much is what you can see, you want to see more about it. You want to see more of it. And these teams are trying to deliver it here. And I would really love to see how they can deliver in this particular time. And it is Nuke, surprisingly. After all this while, it was about time. It was about time for nuke to happen. Today we have actually seen all the maps, and I'm pretty, happy Yeah. about the fact. But yeah, now that we are here, too good for ya, fighting up against TWL. Let's see how the fights on this one. 1v1. And it's going to be a post plant coming in. Music. He's jiggling around, trying to bait out the time, trying to stall for as long as he can. 10 seconds is all they need to defuse. Too easy for you, but still the aggression is coming in. Tav is just going in neck to neck. But at the end, it's gonna be Music winning it onto his name. And TWL, they are onto a good start. Even they are being in the terrorist side, they have done it well. Well, I absolutely did not expect to see the first round getting taken away from the side of Too Good For Ya. But now that it has, I'm pretty interested in seeing how Music and Blaze are going to be bringing this match towards their own favor. Currently, they are moving on towards observations, and I think the approach from Tao might be slightly scary, and the fight as well will go towards him. Should have aggressed forward when he saw the C4 drop right there. Should have come back, maintained the crosses. Of course, there's only three ways in which you can enter towards the site. Being with a teammate would have been the best bet. But caught there, he stuck up to a 1v1 situation where his information has already been given away. But the enemy, Blaze, what is he gonna do? Has the gullet in his hand, a good weapon against an SMG. But looking at the way Corday is just repositioning himself, it's very good, it's very accurate, but that's one mistake he shouldn't have made. There you go, a 16 HP clutch coming right in. TWL 2-0 is what the lead looks like. And too easy for ya. Well, doesn't seem like an easy competition here. Well, it definitely is becoming more and more tough for the side of TWL now that the form has returned for the side of Too Good For Ya. The way Corday and Tav just initiated this third round, it seems like they have found the momentum that they've been looking for. Now I just want to see if they can carry this forward. That's always the case. See how the team is playing, and if they play well, they can keep it up or not. Whether they'll break in peer pressure or not. Music just waiting for the smoke to dissipate. That's where he's gonna push towards the decon. But on the other hand, Blaze trying to make a move here with the Macta in his hand. If anyone comes close to him, he's gonna shred them, absolutely grill them. Well, let's see how this turns around. Currently, it does seem like there's a lot of caution in the action. I'm not seeing as much, aggression anymore as there was earlier. The utils are being used to their maximum potential, but the blood is being drained from the enemy. It's a 1v1, and the better advantage should have been on the upper edge. But even from the lower fighting ground, Team WL was able to find their win. Definitely. Definitely. TWL, they're continuously just doing one thing, which they do the best. Spot heads, try to hit it. 1v1 situation, and it looks like it's gonna be an ordeal. Blaze.
Oh boy, lucky the opponent's bullets ran away, just ran low. That's the reason never pick and silenced M4. It has only 20 bullets in the mag. I mean, it's enough to kill a guy, but it's not enough for you to spray down an entire painting. So that's one thing which too easy for you is gonna regret. There definitely is quite some pause in the game here. Not much movement, not much sound. The approach is split from the side of TWL. The timing will be crucial. The doors have opened, attention has been grabbed, and now is the time to peek from observations, and that's exactly what happened. The frags will flow in their favor, and a beautiful, beautiful fifth for TWL. Playing it smart made too good for you, desperate for information. And once the door opened, the distraction was all set in. And like you mentioned, the swing coming in from observation just made things worse with the corners of 2GY. Gorde, he's stuck in a very good position, but it's up to him how he can capitalize it. They spray down, his HP is way too low. He's gonna be burned down. Molly right on top of him. Still, he has found a comfort, a corner where he can just hold his grounds down. C4 in the hands of Blaze. It needs to plant, but he has already made it into a 1v1 situation. Plant and exit from there. Blaze is continuously just trying to take the battle. 7 HP. That's all that remains. Blaze has a change of plans. Being able to catch Tav off guard is going to be the only escape. The double doors are being approached, and now he's moving in towards observations. Tav can be caught here. One of the windows is already broken. He can actually enter without making a sound. Tav is aware. He gets a glimpse and gets his bullets piercing right through. Yet another round for Too Good For Ya. Too good for you. Right now, they're just doing damage control. Once they move in towards this terrorist side, they have to win those pistols. And उसी के बाद कुछ कर पाएंगे वो. अभी के लिए focus करा जाए तो they definitely want to win this round. Score जो है 5-3 अगर हो जाए then it's gonna be a good one for the corners of 2GY. But TWL ये करने का मौका नहीं देगी. Again silent treatment दिया जा रहा है. दो corners hold करके बैठे हैं. Music and Blaze. Blaze the aggressive one moving all the way towards the double doors. Information बटोरने की कोशिश तो बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे. इस बार दोनों प्लेयर्स एक साथ अप्रोच करना चाह रहे हैं. What is going to be the point of entry, but the way the game is unfolding. अच्छी पोजीशन थी ताओ के पास. Could have actually converted this one, but the shots just did not go as beautifully as they did for the side of TWL. Now it's again a 2v1. The plant has been done. This is difficult for Korde. ओ कुछ भी नामुमकिन नहीं है कॉर्दे के लिए. बुलेट्स हालांकि बहुत कम थे बट ब्लेज जिस तरीके से ये फ्लैंक होल्ड करते हैं जानते हैं कि एनिमी कहाँ पे हैं. The exact execution is very surgical and that's one thing which TWL is managing to do in a such good manner. Too good for you. Abhi ke liye they're stuck. They just want to win this pistol. Else, it's gonna be a tough time for them moving on in the second half. It's still not looking very good for this side of Too Good For Ya. But now that the sides have swapped, शायद एक उम्मीद की रेखा इनके लिए निकल के आए. I have no idea why and how you would take that much damage in the beginning of the round. But Tav, इनके हाव भाव अभी ठीक नहीं रहने वाले. Confidence से भर चुकी है TWL की side. They're literally sore at this point. फ्रैग्स बटोरे जा रहे हैं. एक खिलाड़ी बहुत कम 70 और 74 एचपी के बीच में बैटल एंड लुक एट ब्लेज. सीधे ही खोपड़ी खोल दी उन्होंने. टू गुड फॉर या. Very well handled. एक ही सहारा था पिस्टल राउंड. अभी वो भी हार चुके हैं. दे आर फोर्स टू ब्रिंग इन दोज वेपन्स. पिछले राउंड पे प्लांट भी नहीं कर पाए थे.
करते तो एटलीस्ट दे कुड हैव ब्रॉट इन द केवलार्स एंड हेलमेट अलोंग साइड, बट अभी के लिए रश का एक अच्छा अवसर है, एंड इट्स ऑल टर्न डाउन टू 1v1. प्लेयर्स अकेले बचे हैं इस फाइट के अंदर एंड उनकी एचपी भी काफ़ी कम रहने वाली है। TWL के लिए ये जो एक कंटिन्यूएशन रहने वाला था मोमेंटम का, ये कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा भारी पड़ता दिखाई दे रहा है उनके। प्लांट हो चुका है, अब बस टाइम बाय करना है, लेकिन ये भी नहीं हो पाएगा। इकोनॉमी तो कम थी ही, टू गुड फॉर या की ना वेपन खरीद पाए ना ही टाइम। ये गलतियां बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाली हैं। टू जी भाई इस वक्त खुद को कोस रहे होंगे कि काश मैंने स्विंग नहीं किया होता बार बार, अगर किया भी होता बस इंफॉर्मेशन बटोर के वापस चले जाता। ये वाइड स्विंग करते हुए आगे बढ़े जस्ट टू थ्रू अ यूटिलिटी, एंड दैट्स वेयर ही गॉट कॉट, एंड दैट डिसीजन मेकिंग थोड़ा भारी पड़ते हुए नजर आ रहा है। 8-2 का स्कोर लाइन, एंड TWL already want to mark this as their W with a shotgun, होल्ड किया एंड बस ग्रिल कर दिया ओपोनेंट्स को। जिस टीम को हम सोच रहे थे कि हम इस ओवरऑल टूर्नामेंट का विजेता बनते देखेंगे, उन्हें खदेड़ कर बाहर कर दिया है TWL ने। हैज दिल समथिंग के चेंज्ड अरमा, फॉर यू? हाँ दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, क्या करें। हाँ समथिंग तो चेंज हुआ है, दैट इज द टीम विच आई वुड वांट टू सपोर्ट एंड आई विल वेरी मच सपोर्ट। सो हाँ मेरा आंसर तो वहां पे चेंज हो चुका है। वेल, आपका आंसर जो भी हो, आई एम पिकिंग TWL because you failed to mention which team you're going to be supporting. नो, But yeah, I'll stick with them for now. ठीक है, जैसा आपने बोला वैसे मैं वही पिक कर लूंगा। आपने नाम याद दिला दिया, TWL it is. So TWL is one of the teams which I'm going to be supporting. So thank you, my deadly duo who's just helping me out here to get some good points on board. Wow, okay, got it. Anyways, it's about time that we start, seeing these teams just level up. We were waiting to see a closer match. Abhi bhi hame mila nahi hai, but soon enough. And that soon will happen right after this break.
ladies and gentlemen, welcome back to ROG Showdown series. मैं हूं आपका host हाउस और एडन and मेरे साथ जुड़ी है आहाना एडन। अब जिस तरीके से हर गेम यहाँ पे आज अनफोल्ड होता हुआ नजर आया वो भी कोची में इट हैज बिन वन हेक ऑफ अ रोलर कोस्टर राइट। हमने ऑलरेडी सेमीफाइनल वन तो देख लिया है, सेमीफाइनल टू आपको क्या लगता है कौन से बड़े नाम हमें देखने को मिलेंगे? Well, we'll soon find out. We'll soon find out. I'm not going to take any names just yet because काफी ज़्यादा close मुकाबला हो चुका है अब. So I definitely want to keep my calm here. But yes, I am definitely looking forward to the victory of TWL overall. It's too soon to ओके, say, but that's where I am. वेल इट इज टू सून टू से क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा टू इजी फॉर ईयर लिटरली कोलैप्स करते हुए नजर आई थी इन द मैप ऑफ न्यूक। आई समवेयर थॉट दैट दे आर द वंस हु आर गोना कंटेस्ट टिल द ग्रैंड फिनाले एंड एटलीस्ट टेक द सेकंड प्राइज, एटलीस्ट न्यूनतम अमाउंट, ठीक है। बट नहीं, सेमीफाइनल वन में ही उनको चकमा दे दिया TWL ने एंड इट वाज जस्ट अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग डिफीट। तो वो चीज़ मैं फिर से इंड्यूर नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए मैं भी कोई नाम नहीं लूंगा। आई विल ऑल्सो जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स एंड सी द सेमीफाइनल नंबर टू एंड सी हु सिक्योर्स द सेकंड टिकट टुवर्ड्स द ग्रैंड फिनाले। Absolutely, and this is going to be an interesting one because up stakes बहुत high हो चुकी हैं. If you win this, you at least make sure you're getting something out of that big prize pool we talked about in the beginning. But if you lose, then you are so close yet so far. ट्रू दैट एंड यही चीज़ मैं नहीं चाहूँगा कि ये सारे टीम्स एक्सपीरियंस करें। सो एटलीस्ट हार जीत तो होगी एंड या लाइक whoever loses here in this semi-final two, they're gonna gain the experience. नेक्स्ट टाइम एटलीस्ट थोड़ा बहुत ज़्यादा मेहनत करके आएंगे एंड दे विल अंडरस्टैंड कि किस तरीके से एक 2v2 को अंजाम देना है, हाउ यू कैन ब्रिंग इन दो स्ट्रैटेजीज। तो ठीक है, इट्स जस्ट अ लर्निंग कर्व। सो लेट अस जस्ट enjoy the show and watch how every single one of them, every single team is trying to bring in their parts into or their flavor into the game. Absolutely, and soon we'll see how this unfolds. In a couple of seconds, the teams will dive right into action. Well, TCS TCS and SRP. versus SRP, and it already feels like a very jumpy start. Kill shot again. This man, he's always found near the platform. हमेशा उधर ही नजर रहती है इनकी, थोड़ा passive aggressive खेलते हैं. And this is the swings which he always commits to, getting the information, saying that both the players are coming towards the main itself is a big one. As you can see, number one, who is his teammate Devs, he's also looking at the same direction. The moment he sees someone jump from the platform, he will tell Killshot that there's a push coming right onto him. Ooh! Oh, well played from the side of Killshot. I'm liking the way the cross was being held by Killshot and Devs. There was a little bit of, damage that Killshot absorbed, for which he needed the help, and Devs was able to create the perfect distraction. Very well summarized, Rahana. And Killshot, he's just continuously doing the same dirty thing he used to do in the previous game itself in the very same map. Killshot, very aggressive, and he knows how the opponents play. At least the first two rounds are going to be secured from the corners of Team Cans. And Soul Reaper, their souls are literally being sucked down to the ground. Let's see how this unfolds. I'm already kind of worried about SRP. And look at that. As I mentioned that, quite a lot of damage being served onto their dishes. They try Ooh. to double peek. They still absorb damage, but they're able to frag devs out. TCS looking slightly in trouble. Oh, goodness. They definitely are in trouble. They're in trouble because Killshot is still alive. Oh, little did Prism know that it was not a nade, it was just a flashbang. But right now, just changing the entire position, moving towards the mid, that's already been known.
It's like common knowledge to kill shot. Okay, this is a very obvious move. Right now, he's gonna move all the way from mid, go towards the spawn, and I'm just gonna be holding one of the pillars. That's all. Simple, easy peasy. Has the defusal kit as well. So if things just go worse and there's a post-plant scenario, then it's all done for. Yet another round, yet another round. TCS just going on capitalizing on their numbers one after the other. It's already one third of the way in, to be honest, if the game continues to be as one sided as it is right now. Well, that's some quick math. Thank you. Prasam good flashes coming, but no commitment. This is one mistake which he's gonna regret in the end times. Making his way, still looking towards the mid, trying to get that information whether there's someone or not. Little does he know there's a corner which he has missed. Kill shot. He's gonna get that perfect angle. The C4 drop right in front of his feet. And he's just gonna be holding it out till the last moment. Goes in, goes in with an SMG, retrieves an AK-47. Massive, massive. Like returns. Absolutely. The way TCS has been banking all that money for themselves, they're gonna be good to go, even if they start to, make mistakes here and there. Oh, However, oh. overall, the fight is not letting them make mistakes because for some superficial reason, no matter what TCS does, SRB is on the losing side. Well, well, well. I hope that won't be the case. At least one round is what I need SRP to get, and they will. They And they managed do. to get that shot. Wow. I was kind of afraid there. But the AK-47 was right at the feet. I believe that they couldn't do much about the recoil, so they stuck to the guns of MP. And right now, SRP finally, they have broken the silence. They've gotten one run onto their name, and the economy is not looking that good for TCS. They're still continuously just trying to apply pressure. One coming from the back. This already feels so bad. Oh, is that the C4 down? Oh, yes, it is. It's gonna be guarded till the end. Kill shot, way too low on HP, but he's not afraid of the smoke. He's not afraid of the dark. He's gonna emerge like the Batman he is. Between Devs and Killshot, it does seem like Killshot is the Batman and Devs is the Robin, just being the wingman that he's supposed to be. However, I do feel like the last round itself, sorry, the one before the last round, could have also been a win for TCS if it wasn't a continuous spray. Because as you know in CS2, if you spray after a threshold bullets, it just goes haywire. Yeah. It's a bit tough to understand the spray pattern there. That's the reason you burst fire. You always burst fire. Exactly. And if it is an AK-47, then you just tap onto the head. That's all. Ooh. Wow. Before I could come up with something to say there. No mercy. It's okay, Killshot, 12 years later. It's just the same strat again and again, Anna. It's just the same strategy. It's just utilities and then the P coming in from the corners of TCS. But on the other hand, SRP is it's currently clueless. They don't even know what's gonna happen. Right at the back, kill shot just comes Wow. in. Two headshots right after the other. It was like the bullet just ricocheted and just went on to the head. Oh no, it was just a spray transfer. All right, I see it. But what a way to end the previous round. Kill shot, going aggressive, breaking his legs and still managing to get that perfect frag. Soul Reaper, their soul has just been sucked into the vacuum cleaner, and it's like any moment, it's just gonna be held in one corner, not been given it away.
Well, being on the terrorist side, थोड़ी सी दिक्कत जरूर से आ रही है यहाँ पर kill shot को. His wingman is already dead, but he's still back into the fight and he gets Oh, both the frags for himself. This man is crazy the way he's playing. Oof. well, he is crazy with his shots. TCS, they're already on match point. SRP bringing every single one of the things for this particular round to stop TCS to get the round. Nades, बहुत बढ़िया स्वागत किया उन्होंने, बट अभी भी नहीं लग रहा कि ये रोकेंगे, अड़चन देंगे, इनके रास्ते में बाधा लाएंगे. किल शॉट, पनाम, ड्रैगन. Wow. Okay. Okay, that's one way. That's one way to go about it. Killshot, the way he has started in this particular match, it's been kills after kills, crisp shots after crisp shots. Justifies the name completely. For sure, for sure. I mean, such good performance in semifinals itself. I mean, they've already secured the name towards the grand finale. And yes, what a perfect performance coming from Killshot. I mean, every single time in the 1v2 situation or whether it be flanks, he's just ready. He's very adamant with his aim as well. So that's one thing which I really love about that guy. And yes, TCS, even though like I was expecting them to do something much more crazy here, a 9-0, it would have been a perfect benchmark, but 9-1, not bad, not bad. They're just literally setting the threshold to neutralize every single situation, right? Well, that's true. But this is about time where we walk off and wait for the next day to rise because next day we are still going to be at one more store on Sunday, same place, different city. We'll see you there.